पास और डिग्री है, पीएचडी है, एमफिल है तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये मापदंड ग्रेजुएशन पे भी लागू किया है कि आपको ग्रेजुएशन में भी सामान्य है तो 50, ओबीसी है 40 और अनुसूचित जाति है ओबीसी 45 और एससी हैं तो 40% मार्क लाना जरूरी है। ये लोग अगर कोई गलती से ग्रेजुएशन में 40% या जो मापदंड है नहीं ला पाया तो भले वो पीजी में टॉप किया हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, जो यूजीसी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के जो प्रार्थना पत्र अप्लाई किया जाता है वो मापदंड हर जगह लागू होना चाहिए। धन्यवाद ब्रिजलाल जी। संत बलबीर सिंह पंजाबी में बोलेंगे। सर, आपका ध्यान पंजाब के मालवा सेम के इलाके दिवाना चाहना। पंजाब के मुक्तसर ते फाजिलका दो जिले है जिहड़े इस वेले सेम की मार दे विच है, जिथे बहुत बारिश हो गई है, पानी जिहड़ा हैगा इकट्ठा हो गया ते जिथे लोग बेबसा सी 23 जुलाई नूं उन्हां 4 पिंडां विच जाके आए। मिड्डा पिंड, बाम पिंड, तरखान वाला, लखीरे वाला, लकड़ वाला ते महापद्धर, इन्हां पिंडां दे विच फसलां डुब गईयां ते नरमे की फसल मर गई है, झोना मर गया ते एक इहो जिहे परिवार है कि उन्हां कोल चारा है नहीं, उन्हां दे कोल उन्हां दे एक गद्दा पिंड डोब दा पिंड एक किसान रंजन सिंह जी ने, वो पंचायत मैंबर भी है, उन्हें खुदकशी कर ली है। माल विभाग के अनुसार मुक्तसर जिले में 1 लाख एकड़ के करीब पानी के फसलां डुब गई। फाजिलका दे विच 40,000 एकड़ पानी के डुब गई है। उत्थे हालात इन्ने माड़े हैं कि लोगों के सिर कर्जा चढ़िया, कईयां दे 4-4 साल हो गए उन्हां दे फसलां नहीं हुईयां। सो एक सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी है फाजिलका दे विच कि जिहड़ा पाकिस्तान दा बॉर्डर जिहड़ा है वो नाल लगदा ते 22 ट्रेनां जिहड़ियां है वो फाजिलका दे विच जाके इकट्ठियां हुंदियां, पानी लैके जांदियां। मोहरे पाकिस्तान वाले बन्ने बंन लगा होया, वो पानी नूं पाकिस्तान दे विच एंटर नहीं होण दिंदे। सो वो एरिया सारा ही छेम दे विच मरिया होया। उन्हां इलाकों की इन्नी हालात माड़ी है क्योंकि एक दा पानी गंदे भी है, प्रदूषित भी है, उहदे नाल पानी इकट्ठा होने दे नाल उस इलाके दे विच इन्नियां सीरियस बीमारियां वा जिन्हां दा देख के हैरान होंगे। पिंड दे विच अपंग बच्चे जिहड़े है वो पैदा हो रहे हैं। बहुत वड्डी प्रॉब्लम है जिहड़ी इस वेले उत्थे उस एरिया दे विच है। सो उत्थे असीं बेनती करदे हैं कि तुहाडा सरकार का ध्यान दिवाना चाहुंदे हैं कि एक तो पानी जिहड़ा हैगा पाकिस्तान वाले पासों उहनूं खोलिया जावे, उन्हां दे नाल गलबात कीती जावे ताकि उस इलाके नूं राहत मिले। दूसरे जिहड़े पीड़ित किसान आ जिन्हां दीयां फसलां डुब गईयां उन्हां नूं राहत दित्ती जावे। उहदे नाल ये लगातार सेम की समस्या जिहदे वास्ते कल्ला पंजाब सरकार नहीं सेंटर सरकार भी अपना योगदान पावे, क्योंकि जिहड़े रेगूलर परिवार जिहड़ा हैगा जिन्हां दीयां फसलां मर जांदियां, गुलाबी सुंडी दे नाल पिछले साल जिहड़ियां फसलां मर गईयां। जदों एक जिमींदार इस तरह जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ नहीं हुंदी, अखीर दे उत्ते खुदकशियां ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। पंजाब ਦਾ पानी मुक रहा, पानी सुक रहा, किसान जिहड़ा है वो खुदकशियां कर रहा। सो असीं बेनती करांगे कि उन्हां किसानां दी उस इलाके दी जिहड़ी है बाह फड़ी जावे ताकि जिहड़ा ये मसला हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी चंगा बोलिए है, आपको अभिनंदन। श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। ओडिशा के मयूरभंज जिले में जातीय उद्यान शिमलीपाल है। जंगल और परिवेश विभाग इस उद्यान को जातीय उद्यान की मान्यता नहीं दे रहे हैं और इस जंगल में जो शिकारी लोग जानवर को मारते हैं और हर रोज जानवर मरते हैं और देखा जाता है कि जो वन्य प्राणी भटक कर सब गांव के इलाके में आ जाते हैं। कुछ साल में देखा जाता है कि यहाँ वन्य प्राणी के शिकारी लोग शिकार करते हैं और बड़े बड़े पेड़ को काटकर बाहर चालान करते हैं। जंगली प्राणी गांव में शहर को चल आ रहे हैं। साल में हर बार पश्चिम बंग झारखंड के हाथी शिमलीपाल को
आते हैं। शुरू में हाथी के लिए कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन अब इसी हाथी कॉरिडोर को मरम्मत नहीं किया जा रहा है, इसीलिए जंगली हाथी रास्ता भटककर गांव और शहर इलाका को आ रहे हैं। ज्यादातर मयूरभंज जिला के राजगोविंदपुर, बेतनोटी, सुलियापदा, बांगरीपोशी, चित्रोड़ा, सारसकोना, बिसोई ब्लॉक के जन बस्ती में इलाके में आकर घर तोड़ते हैं और कृषि क्षेत्र नुकसान करते हैं, प्राण हानि करते हैं। उदाहरण स्वरूप इस साल 10 हाथी इस साल 10 से ज्यादा लोग का जान गया है, लेकिन हाल ही में NH-49 में हाथी चले आने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुआ था। हाथी गुस्से से आकर एक चलती हुई बस और कार को आक्रमण किया था। आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 12 साल में ओडिशा में 954 हाथी का मृत्यु हुआ है। केवल 2019 के आज तक 254 हाथी मरे हैं और पिछले 3 सालों में हाथी ट्रैक के लिए 8 करोड़, हाथी को भगाने के लिए 70 करोड़ खर्च हुआ था। 2019 से आज तक हाथी के आक्रमण से 342 लोग का मृत्यु हुआ है और 369 शारीरिक आघात हुए हैं। जंगल और परिवेश विभाग को मेरे अनुरोध के है कि शिमलीपाल में हाथी कॉरिडोर का मरम्मत करे, वन्य प्राणी और लोगों का जीवन रक्षा करे और शिमलीपाल का जातीय उद्यान का मान्यता दे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रुजिनो वैक्यूम फेडरल। Thank you, Mr. Chairman. I wish to inform that prior to the liberation of Goa, 1961, Goa's economy was a money order economy because virtually every Goan was working abroad. Every alternate house, there was a seafarer who was working abroad. And I'm very happy that the seafarers community in Goa has played a very immense contribution, not only for the economy of Goa, but for the economy of the country, because they used to remit foreign exchange, which are very precious for the country. During COVID-19, we are very proud that the Goan seafarers has played a yeoman service all over the world. Work hard. Today, what pains me, that even though every alternate house in Goa are seamen, their condition is very bad. Because overall economic meltdown, there is rampant unemployment, and there is hardly any system to give them pension. Today, I request to Honorable Chairman that the shipping ministry looks into the matter. They were getting a pension of 200 rupees per month. That also has stopped. It is a shame that these people who have played such a great role in the history of this country are today not having any pension scheme, not having any ex gratia. The 200 rupees ex gratia is also stopped now. So I request that please enhance this amount and the families can live a life of honor and dignity for having contributed so immensely for the economy of this country. Thank you, Feluji. Sri Rajamani Patel, whoever want to associate, send your name by slip. माननीय सभापति जी, मनरेगा योजना के तहत मध्य प्रदेश के कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मनरेगा योजना अंतर्गत रीवा में सभी गौशाला निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। निर्माण एजेंसी भी पंचायत को बनाया गया था, लेकिन जनपद के अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार और कानून के अधिकांश गौशाला का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों से छीनकर प्रदेश के तथा जिले के बाहरी व्यक्तियों को दिया गया।
जिसमें आवास भारद्वाज राजाराम कुशवाहा की टीम को दिया गया। इसमें कई व्यक्तियों का गिरोह काम कर रहा है। गिरोह के लोगों द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार का लालच दे करके आवास की टीम एनजीओ ने रोजगार युवकों से सुरक्षा राशि के नाम पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक वसूल किया है। गौशाला का खाका सरकारी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, जिसमें से लेकर के जनपद तक के अधिकारियों का हाथ रहा है। पेटी ठेकेदारों को बेरोजगारों ने हनुमाना, मऊगंज, सिरमौर, जवा में काम भी शुरू किया गया, उसका भुगतान नहीं किया। कुछ का भुगतान ग्राम पंचायतों के बिना अनुमोदन के माननीय सभापति महोदय, बिना उनकी जानकारी के मूल्यांकन के अभाव में दीनदयाल ट्रेडर्स को भुगतान कर दिया गया, जो पूर्णतः अवैधानिक है। कई बेरोजगारों को ठगा गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। बार बार मंत्रियों से आग्रह किया गया कि जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, बेरोजगारों को न्याय दिया जाए, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला, इसकी जांच नहीं हुई। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए, बेरोजगारों का लंबित राशि का भुगतान किया जाए तथा विधि विरुद्ध काम करने वाले सदस्यों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और बेरोजगार युवकों को जिनका शोषण हुआ है उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद राजामणि जी। श्री अजय प्रताप सिंह। श्री अजय प्रताप सिंह, मेरा स्पेशल आपका मेंशन 0 आवर। 0 स्पेशल मेंशन में लगाया था। हाँ, डिमांड टू प्रोवाइड होम डिलीवरी, वो स्पेशल मेंशन में लेना चाहते हैं आप? बोल देता हूँ। बोल दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिकों को सस्ते दर पर विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हो, इसके लिए भारतीय सेना द्वारा सीएसडी कैंटीन की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ये कैंटीन सामान्यतः विभिन्न रेजिमेंट के पदस्थी के स्थान पर स्थित रहती हैं अथवा देश के ऐसे प्रमुख शहर जहां पर सेना के जवान या अधिकारी निवास करते हैं, वहां पर ऐसी ये कैंटीन विद्यमान है। लेकिन इन कैंटीनों के माध्यम से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सेवा पर्याप्त नहीं मिल पाती है। आज तकनीकी का जमाना है, बाजार का स्वरूप बदल रहा है। बाजार अब बाजार से निकलकर लोगों की मुट्ठी में पहुंच गया है और इसीलिए उस तकनीकी का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां अपने उत्पादों की होम डिलीवरी करती हैं, उसी तरीके से ये जो सीएसडी कैंटीन की सुविधा है, इस सुविधा का अधिक से अधिक सैनिक उपयोग कर सकें, भूतपूर्व सैनिक उपयोग कर सकें, तो इस सेवा का भी डिजिटलाइजेशन हो, ऑनलाइन के माध्यम से ये सेवा सैनिकों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि देश के सुदूर कोने में भी निवास करने वाले सैनिकों को इस सेवा के माध्यम से सस्ते दर पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अजय प्रताप जी। श्री संतोष कुमार। संतोष कुमार। Thank you, Chairman, sir. It's a harsh Indian reality that we are facing medical inflation. So no one can deny this fact. It's a matter of fact that India is the third largest manufacturer of medicines, and we have the lowest production costs also. But unfortunately, the medical inflation in this country is very high, and it is 14% if we compare with other Asian countries. And secondly, according to the report of the Ministry of Statistics, in this year itself, it was shot up by 7.21%. There is no point in making elaborate details on these percentages, but the reality is that an ordinary Indian it is very difficult for an ordinary Indian to afford medical costs. So we have 355 essential medicines which are listed in the national list of essential medicines, and the prices of all these medicines were steeply hiked. So, and 63% of expenditure is for medicines also. I mean, as far as the lower middle income groups are concerned. So what I request is that we need to
rethink about our medical policies. We need to deposit more on, spend more on healthcare, and pharma companies must be controlled at any cost. There is a recent Supreme Court verdict. I don't know on which date it was exactly pronounced, but it says that medical companies they are giving freebies to doctors, which are banned by law, but even then they are claiming tax exemption also. So these medical companies, no one is opposing medical companies to earn profits, but they are getting abnormally high profits. So these are the realities. Therefore, I urge to make health a fundamental right. Secondly, these companies must be controlled, and we have to spend more on healthcare. Thank you, Santosh Kumar ji. See the advantage of smooth running of the house. Sri Harbhajan Singh. Sri Harbhajan Singh. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आज मौका मिल रहा है यहाँ बोलने का और आप सबके बीच में आया हूं। तो माननीय महोदय जी, मैं अफगानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में गुरुद्वारे, चाहे वो कोविड के दौरान या गुरुद्वारे ही नहीं थे, वो भोजन और हर तरीके की चीज, ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने हर तरीके की चीज लोगों के लिए उपलब्ध की थी। स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करूं तो देश के सिखों के योगदान के बारे में हम सबको पता है। जीडीपी की बात करूं, रोजगार की बात करूं या दान धर्म की बात करूं तो सिख हमेशा सबसे आगे रहा है। सिख समुदाय भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों में एक मजबूत कड़ी रहा है। वो अपने साहस, पराक्रम और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। और ये सब होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? 18 जून को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह करता पवन में कई धमाके हुए। परिसर की ओर जाने वाले किले और दरवाजे के बाहर उग्रवादियों ने गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। 25 मार्च 2020 को आईएस के बंदूकधारियों ने आत्मघाती हमलावरों ने काबुल के गुरुद्वारों पर राय साहेब पर हमला किया। बताया जाता है कि इमारत में 200 लोग थे, जिसमें बच्चों समेत 25 सिखों की मौत हुई। राय साहेब गुरुद्वारा हमले में मारे जाने वाले जो लोग थे, उनके अंतिम संस्कार के अगले दिन फिर और एक हमला हुआ। 2018 में एक आत्मघाती हमलावर के पूर्वी शहर जलालाबाद में एक सभा पर हमला किया गया। उसके बाद सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान कभी हजारों सिखों और हिंदुओं का घर था, लेकिन दर्शकों के संघर्ष के कारण ये संख्या कम होकर मुट्ठी भर रह गई है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में 2,20,000 सिख और हिंदू रहते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में ये आंकड़ा गिरकर 15,000 और 2016 में गिरकर 1,350 हो गया है। जलालाबाद के हमले के समय 1,500 सिख थे। अब उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तालिबान के सत्ता में लौटने से 300 लोग और कम हो गए, 300 सिख और कम हो गए हैं। अब केवल वहां पे 150 के आसपास। प्लीज हरभजन जी 0 और को 3 मिनट ही टाइम देते। आपने अच्छा महत्वपूर्ण विषय उठाया, मगर नहीं मैं अलाउ करूंगा, मगर वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। तो स्टॉप होता है। राइट राइट हरभजन जी हमारा जाने माने क्रिकेटर है, सबको मालूम है। जो इन्होंने विषय उठाया वो महत्वपूर्ण विषय है, तो मेरे ख्याल से विदेश मंत्री उसके ऊपर और ध्यान देंगे। श्री जौहर सरकार, डॉक्टर अमी याज्ञिक। Thank you, sir.
for giving me this opportunity to raise a very important issue. Sir, the issue relates to cancer patients. Sir, recent report of the Indian Council for Medical Research shows that number of Indians suffering from cancer is projected to increase to 29.8 million in 2025, which was earlier 26.7 million in 2021. So there's also a question that was asked in the Lok Sabha, and the then health minister had replied to that question and said that out of 1,40,67,894 cases of cancer in the world, in 2012, India reported 10,57,204 cases. And that means that 7.5% of global cancer burden was shared by India. That means that every 13th cancer patient is an Indian in the world. So this is a very, very gross situation. And this also shows that we need access for the cancer treatment, and the facilities should be a major issue affecting the nation's health. Sir, every year 1.5 million new cases are diagnosed. Cancer centers are, sir, mostly in cities, and people coming from villages have to travel far and wide to see that the patient gets cancer care. Sir, that is also expensive. They jeopardize their livelihoods to see that care continuity is there for the patient. Not to talk about the trauma of the patient and the relatives. I think, sir, I would request to the government through you, sir, and especially urge that there should be more investment in the infrastructure for cancer patients. There should be radiotherapy units, radiation therapy units, and chemotherapy units so that they can access these facilities. So the 325th report of the Parliamentary Standing Committee on science, technology, environment, forest and climate change also pointed out this fact also, that there should be availability of adequate facilities in local regions so that people do not suffer from not getting cancer care, sir. Sir, there is another aspect which needs to be looked into by the health ministry, that there should be affordable and equitable care for cancer patients. So it's a very traumatic situation when we talk about cancer. The trauma is emotional, the trauma is within the family, the trauma is also economic. The report also pointed out that 6 crore people are pushed below the poverty line because of incurring these costs. Sir, I would urge the government to take this issue seriously. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Ami. Dr. Lakshmikant Vajpayee. माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए युवाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार समाज के अनुसूचित वर्ग को और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा संविधान प्रदत्त प्राप्त थी, उसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन उस आरक्षण की व्यवस्था में एक बात की चूक हो गई कि जिस प्रकार अन्य आरक्षणों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, वो 5 वर्ष की छूट इस आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के आरक्षण में दी जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके लिए लगातार युवा मांग कर रहे हैं। देश के 7 राज्यों ने अपने यहाँ प्रशासनिक आदेश जारी करके ये सुविधा प्रदान कर दी है, लेकिन अन्य राज्य इसको नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर यह प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से कि कृपा करके जिस प्रकार आपने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर उनको भी ऊपर उठने में मदद प्रदान की है, उसी प्रकार उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की छूट देने के लिए केंद्र सरकार आदेश जारी करे, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय जो रेलवे के श्रमिकों से जुड़ा हुआ है वो सदन में रखने का मौका दिया। मान्यवर, रेलवे की सबसे बड़ी आय माल भाड़ा के माध्यम से, माल की ढुलाई के माध्यम से होती है मान्यवर। और माल गोदाम जो रेलवे के हैं उसमें से पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से बहुत सारे श्रमिक लाखों की संख्या में वहां पर काम करते हैं, जो माल की ढुलाई करते हैं, माल को लादते हैं। उन श्रमिकों का लंबे समय से जो ठेकेदार होते हैं सर, वो शोषण कर रहे हैं, उनको उनकी मजदूरी नहीं देते,
उनकी मजदूरी का कोई एक नियत राशि निर्धारित नहीं है। ये प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है और कल मेरे पास उनका जो यूनियन है उसके एक नेता मनोरंजन जी और तमाम श्रमिक आए थे सर। उनकी एक ही मांग है कि रेलवे के जो माल गोदाम में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो रेल के माल भाड़े को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम ठेकेदारों के शोषण से बचाया जाए और जो ठेकेदार श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओर उनका ध्यान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। धन्यवाद संजय जी। एसोसिएट प्रेसिडेंट श्री नारायण कोरगप्पा। Thank you, Chairman. Given an opportunity. People of Karnataka, particularly from Mangalore, are grateful for Honorable Road Transport Minister Nitin Gadkari for announcing while laying foundation stone for 15th National Highway project in Karnataka in February this year. That highest priority would be given the Shiradi between Bangalore and Bangalore National Highway 75. Sir, Bangalore is the second largest business center in Karnataka with more than 75% of country's timber, cashew nut, coffee, export, food processing and other port-related activities, and being one of the 5 cities in the country to have a major port and the international airport. Bangalore is an important and second fastest growing non-metro cities after Kochi in Karnataka. Steel and fertilizers are also major export product from Bangalore port. There is a huge potential and scope of pushing economic activities to a new horizon in Bangalore, thereby create a huge employment opportunity for the people in this region. But all these would become a standstill, more particularly during monsoon season. For example, during this monsoon, Shiradi Ghat, which is the major link between the coast and the capital, was closed for vehicle downhill and at other places due to landslides. The problem is landslides at various places in the Ghat road becomes a order of this day during monsoon, impacting economic activities, disturbing vehicular movement. There is only one solution for all these ills, and it is no take up Shiradi Ghat road between Bangalore National Highway. The government proposed to expand the highway to 6-lane combination to tunnels and high pier arch bridges in the Ghat section. Sir, feasibility come geotechnical study for Shiradi Ghat bypass was already done, and it is the team of international experts has found that are the technical difficulties building long tunnels. So now there is a need to prepare the DPR for the tunnel bypass, and was estimated rupees 14,000 crores would be required to complete this project, the MRG. Sir, I assure to Geo, as behalf of government of Karnataka, that is the state of Karnataka will be assured to धन्यवाद forest. श्री नारायण कोरगप्पा जी। मैं सबको बताना चाहता हूँ, 0 आवर में पढ़ना नहीं, बोलना चाहिए। घर में पढ़ के हाउस में बोलना चाहिए। So 0 hour you are not supposed to read, you are supposed to speak. Special mention you can read because detailed text has been already. Please keep it in mind. Mr. Roy Pandey. थैंक यू सर। माननीय महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी आज भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और सबसे बड़े उत्पादकों में उसकी गिनती होती है। सन 2000 में भारत की विनिवेश नीति के तहत स्टरलाइट कंपनी को इस कंपनी का 51% हिस्सा बेच दिया गया था। आज 51% उसकी हिस्सेदारी है
मैं कहना चाहती हूं कि इस 51% जब इनके पास में पहुंचा, इस भारत एल्यूमिनियम कंपनी का जो 51% इनके पास पहुंचने के बाद, उस समय उत्पादन 1 टन था और आज 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी यह कंपनी वहां के स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस कंपनी का जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जो जमीन था, उस जमीन पर भी इनका कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रखकर जमीन का आवंटन कराया। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने इन्हें जो जमीन का आवंटन किया, वहां के स्थानीय प्रशासन को जो इन्हें अनुमति दी गई, वो अनुमति अवैध तौर पर दी गई है। स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों को आईटीआई के तहत ये प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। जो वहां पर दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को भी इन्होंने निजी के ठेके पर दिया हुआ है। इस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और वहां पर सीएसआर के तहत इन्हें जो काम करना चाहिए, ये बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घाटे पर अपनी कंपनी को दर्शाते हैं और 1 टन से 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर ये कंपनी घाटे में कैसे है। और लगातार अगर घाटे पर है, और अगर घाटे पर है 5 लाख टन होने के बाद भी, तो सरकार इनकी जांच करे। मैं आज ये सरकार से अनुरोध करती हूं कि बाल्को के द्वारा की गई अनियमितताओं पर तत्काल जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज जी। स्पेशल मेंशन मोहम्मद अब्दुल्ला फास्ट टैग। Sir, thank you, sir. The FASTag, which is issued by various banks, was unilaterally mandating a minimum amount value of the FASTag account or wallet, in addition to the security deposit amount. As a result, many FASTag users were not allowed to pass through a toll plaza in spite of having sufficient balance in their FASTag account. This results in delay at the toll plaza. In order to increase the FASTag penetration to ensure seamless movement to traffic and to reduce avoidable delay at the toll plaza, the National Highway Authority of India has recently decided to remove the mandatory threshold amount for the FASTag account or wallet, which was paid by the users in addition to the security deposit for the passenger segment. But due to the infrastructure and management issues of the FASTag service, in most of the toll plaza, the users got wrongly charged double for insufficient balance. Hence, I request the Union government to immediately look into this issue with utmost priority and take the necessary steps to rectify the issue, sir. Thank you. Thank you, Abdullah ji. Next is Sir Manoj Kumar Jha. Manoj. Then next is Sri Suken Sekhar Rai. As per notification number 01/2017, Customs of the Department of Revenue, Ministry of Finance, as amended from time to time, imposition of definitive anti-dumping duty on imports of jute yarn, twine, Hessian fabric, and jute sacking bags originating in or exported from Nepal and imported into India has been recommended. As per the said notifications, anti-dumping duty on Hessian fabric is either nil or lower than anti-dumping duty on sacking bags. To circumvent the actual levy, a section of traders in Nepal are reportedly resorting to the unfair practices of passing of jute sacking bags as Hessian fabric, as a result of which our domestic jute industry is not only suffering, but also our government is losing huge revenue on account of legitimate duty. I would therefore urge upon the Honorable Finance Minister to have the matter inquired into for appropriate remedial measure. Thank you, Sukenji. Sri Ajit Kumar Bhuyan. Ajit Kumar, please. Thank you, Chairman sir, for giving this opportunity. Sir, the Rangya Railway Division is one of the 5 railway
divisions under the Northeast Frontier Railway Zone of Indian Railways. So I would like to draw your kind attention to a decade-long pending issue of an additional stoppage of 12424 Rajdhani Express at Rangya Junction. Sir, people are compelled to go to Guwahati station by hiring cars, losing hard-earned money, and spoiling their precious time. Some elderly people even being compelled to stay one extra night at the nearby hotel of Paltan Bazar, Guwahati. Sir, as you know that Assam is a frontier state and its people are to spend much more time reaching New Delhi by train. At present, there is only one daily service of Rajdhani is 12423/424. Due to some faulty arrangements, users are to face many hurdles and lose hard-earned money as well as precious time. It is also known to you all that Rangya station is the junction point of rail connectivity of Dhemaji, Lakhimpur, Biswanath, Sunitpur, Udalguri, Baksa, Kamrup, Nalbari districts of Assam, and East Kameng, East Siang, West Siang, East districts of Arunachal Pradesh. In the absence of an additional stoppage at the Rangya junction, people of nearby areas are facing a huge problem in catching the Rajdhani Express. I urge the government for stoppage of Rajdhani Express train number 12424 at Rangya junction. Thank you, sir. Thank you, Ayajji. Associate, please send your name. Sri Manas Ranjan Mangaraj. Sri Manas Ranjan Mangaraj. Honorable Chairman, sir. My subject is earliest completion of Jaipur and Utkal airports. I would like to draw your kind attention to the unprecedented delay in the completion of two airports in Maharashtra infested region of Koraput and Kalahandi districts. The airports in Jaipur, Koraput and Utkela, Kalahandi were planned along with Jharsuguda airport under the Udan scheme way back in 2017. But the work began only on 2020 after a lot of deliberations and persuasions. While the Jharsuguda airport has become operational and Raurkela has been added to the list of Udan, people of Koraput and Kalahandi are still awaiting their dreams to be materialized. Despite several inspections and promises, thereafter things are getting delayed and unknown regions. Both Koraput and Kalahandi are known as the gateway to commercial hubs in the neighboring states. Whether in terms of business viability or safe communication mode in the wake of Maoist threats, Jaipur and Utkela airports are very crucial, not only for people in the region, but also for the entire state. I request you to kindly take up this matter on a high priority and ensure that both airports become operational as soon as possible in the higher interest of the people. Thank you, Manas Ranjan. Sri Kailash Soni. Kailash Soni ji. माननीय सभापति जी, किसानों की रासायनिक खाद के बाबत भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। किसानों की रासायनिक खाद के ऊपर ब्लैक द्वारा डाका डाला जा रहा है। फर्टिलाइजर मंत्रालय के उड़न दस्ते ने पिछले 2 महीने में 100 करोड़ की यूरिया जब्त की है। यूरिया की चोरी और तस्करी रोकने का परिणाम यह हुआ है कि बाजार में यूरिया की उपलब्धता बढ़ गई है। बता दें कि 10 लाख टन नीम कोटेड यूरिया की चोरी से सरकार को सालाना 6000 करोड़ की चपत लगती है। फर्टिलाइजर मंत्रालय के मुताबिक देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में सालाना 10 से 12 लाख टन यूरिया की खपत होती है, जबकि मुश्किल से 2 लाख टन यूरिया ही इनके द्वारा आयात की जाती है। जिन इकाइयों में यूरिया की खपत होती है वो नीम वाली
यूरिया का उपयोग करने लगी हैं, जबकि खेती वाली यूरिया पर भारी सब्सिडी दी जाती है। किसानों को मिलने वाली यूरिया का मूल्य 266 रुपए प्रति बोरी 45 किलोग्राम है, जबकि एक बोरी यूरिया पर सरकार की लागत 3000 रुपए आती है। बाकी खर्च सरकारी सब्सिडी से पूरा किया जाता है। अतः आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए सरकार तत्काल अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में डाले, ताकि यह चोरी एवं सभी तरह की ब्लैक को तत्काल प्रभाव से रोका जा सके, जिससे सरकार को छापा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार को प्रतिवर्ष 6000 करोड़ की बचत होगी। धन्यवाद। आप लोगों ने डॉक्टर करीमो जी है, प्लीज quick, one more time come. Thank you, sir. Yes, sorry. Honorable Chairman, sir, railways is the lifeline of the people of country, especially the poor and downtrodden people depend on railways for their travel. The railways had withdrawn train services and cancelled the fare concession for senior citizens and differently abled persons since the COVID-19 lockdown from 2020 March. Indian Railways provide concession and ticket fare for 53 category of people like senior citizens, differently abled persons, medal-winning sports personalities, cancer patients, journalists. Women above 58 years, men above 60 years were given 50% and 40% concession respectively. Freedom fighters were honored and were given 100% concession. So full restoration of the train services yet to happen even after 1 year since the government imposed lockdown. To add more woes to the government is running 70% of special trains with higher fares. Poor passengers have to spend more money for the travel by train even for a short distance. The lack of concession has burdened the elderly persons. Therefore, I urge the government to restore 100% of normal train services under reduce the fares in special trains and provide the concession fare tickets for elderly citizens and differently able persons immediately. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, question hour. Sasmit Patra. 181. Srimati Jabe Mathir. Huh? Special mention, now time is over. Question number 181. Other special mentions are to be laid on the table. जवाब पटल पर। First supplementary, Srimati JB Mathir Hisham. So question number 181, sir. Please. माननीय मंत्री जी है ना, कह दिया. First supplementary. Sir, I am deeply obliged for the opportunity, and through you, I wish to ask the first supplementary question. It is in connection with the annexure which is attached to the reply, wherein at serial number 2 and 3, the two toll plazas, Paliyakara and Panyakara, have been mentioned. And these two toll plazas, the distance between both of them is below 60 kilometers, and to be precise, 37 kilometers. So, in the interest of commuters and in the interest of public transport, and also considering the fact that the Paliyakara toll plaza have collected already 1,080 crores and also towards 850 project cost, shouldn't, and also the rule in existence which says 60 kilometer, there should not be toll plazas between two toll plazas. Considering that, shouldn't one of it be closed? Be brief in question. The question is, shouldn't one of the toll plazas be closed, taking into consideration the rule of 60 kilometers and in the interest of common man and public transport? Thank you. Honorable Chairman, sir, already there is a rule for 60 kilometers as far as the toll plaza is concerned. The fee plaza on same section of NH and in the same direction cannot be established within 60 kilometers. This is the condition. But the exception is there, which is already written in the rule, that fee plaza within 60 kilometers is for collection of fee for a permanent bridge, bypass or tunnel. Now the problem is that presently in the
Weiler Vanda Kacheri, Pammalam. This is a private concessionary is there, and his concession period is for 20 years. It is 17/5/2033, and this is the BOT toll. For the reason, if we are going to stop that, government is now mandatory. We have to give the compensation for that. But the problem is genuine and legitimate. My suggestion for honorable member is we are in the process of making new option for that. First of all, we have the system by which we are presently collecting the toll. That is already the system is there. But now we are searching for two options. One is satellite-based toll system, where the GPS will be there in the car and the toll will directly, we will subtract it from their bank account. The other option is the number plate. Already from 19, we have started to have new number plate with the new technology. It is mandatory to the manufacturer to take that number plate. So we can replace the number plate, old number plate by the new number plates. And there will be a system, computerized system, by which we can use the software and we will collect the toll. The easiest system is when you start from the point, it will register. And when you leave the highway, it will register. So exactly whatever the amount which is of exactly the car drive, only that much toll will be subtracted from his account. So this can be a good system. We are already working on it. We are not make up our mind as far as the selection of the technology is concerned. But as early as possible, within a month, we will select the technology. We will use all the sophisticated technology of the world by which it will be useful for the people, and there will be no queues, no rush, no problem as far as the fuel is concerned, because lot of traffic jam is there, and by which we will resolve the issue. I am very much sympathetic about you also, because this is a legitimate and genuine problem. Presently, as far as the law is concerned, we are already have no problem because there is a provision. But still, I understand the feeling behind your question, and that is very legitimate, and the spirit is very correct. I accept that, and as early as possible, we will find out the solution, and we will resolve the issue, and we will definitely find out the solution and give relief to you. I will promise you to House and you also. Thank you. Second supplementary. Thank you, sir. My second supplementary is regarding when we go through the highways, the toll plazas, in spite of FASTags being introduced, there's a lot of traffic blocks still in the toll plazas, which makes the commuting, the whole purpose of highways, go down the drain. So would the GPS system be introduced, and if so, when will it be made functional? Thank you. It is one of the successful technologies used by NHI. Sir, I am telling you, sir, this is really a remarkable contribution from our side to the country, that before FASTag, our toll income was very less. I don't want to elaborate the reason for that. But now, the FASTag issued till date is 5 crore 56 lakhs. Average daily collection via FASTag is 120 crore rupees per day. And penetration of FASTag is 96.6%, approximately 97%. And the 3% people habitually they are paying double toll, but they don't want to take FASTag. The reason is that I don't want to elaborate. But we are also searching that there are some unlawful activities because of the tax and other thing. They are practicing the thing. So we want to make it 100%. But sir, after the ETC also, we are in the solution of making FASTag in place of FASTag, making satellite, using the satellite by using GPS system in the car. And on the basis of that, our idea was to take the toll and take it from it. And it can be easy also. But now the other system with the number plate which we have, on the basis of that, the technology is available. Already India, also we have got a lot of good technology. We are in the process. We will select the technology. Presently, in my opinion, still we are not taking official decision. But the number plate technology is good. On the basis of that, there will be no toll plaza, and there will be a sophisticated, computerized, digitalized system by which we can give relief, and there will be no queues, no toll plaza, no person, nothing will be there, and it can give great relief to the people by and large, and government will get absolute revenue from that. But for that reason, we need to introduce the bill into the parliament, because if suppose anyone is not obeying the system and is not paying the toll, we have to take action against him. Presently, no law is available.
So we are also going to introduce the bill into the parliament. And after that, we want to implement the best system in the world, which is available for particularly in India. And I'm confident that it will give the relief and it will resolve your problems. धन्यवाद. Honorable Thambi Durei ji. Sir, thank you very much, sir. The rule of that established toll plaza, within kilometers, 7 kilometers of municipality, there must not be any toll plaza. Sir, in my state, Tamil Nadu, Krishnagiri, there is a toll plaza within that area. I requested the minister whether he will take the action to close up that toll plaza to give the facilities for the local people, because they have to go to collector office also located, medical college or hospital there. Thank you, Thambi Durei ji. People are suffering. That old agreement which is cancer Thank over. you. Thank you. Put your I want to question. explain that is why the new man was taken over the construction is not eligible. You have already to put use your that question, within sir. 7 kilometers. Thank you. But still there is that. Mani Mantri whether ji, he wants please. to take up Thank the- you. Honorable Chairman, sir, he is absolutely correct. But I am not responsible for that, sir. Before 2014, when UPA government was there, and at that time probably the minister from Tamil Nadu was there, they have taken a decision. That is a very, very good terminology was there, additional of sweetener. And that additional of sweetener means when in the, actually it is really unjustified, unlawful, it's not good. And they added it, the people start from the city area, there will be toll plaza and everyone has to pay the toll, that they will call as sweetener. It is totally wrong. Sir, fortunately or unfortunately, I am the father of this toll because first time in the country, I start the toll system in India and the first project of BOT in India, that is Thane BOT bypass in Maharashtra. Sir, I am with him, and with the new system which we are going to launch, we will see that the city area will be eliminated. There will be no charge on the people because they are taking only 10-kilometer road and paying the toll for 75 kilometers. That is absolutely wrong. But this is not my problem, sir. Please try to understand. It is from the previous government. But sir, we will rectify the thing. Thank you. We will rectify the thing, and I'm with you, with your all, whatever you are feeling about it, the same feeling I have about it, and we will rectify the thing and we will do it. Mani Bhuneshwar Kalita. Thank you, Deputy Chairman, sir. My supplementary arise from the minister's reply, which was very exhaustive, and he has given a lot of clarifications about this. And he said that the rule is within less than 60 kilometers in the same direction, there should not be toll plaza. But there are. He said that there are. In Assam, there are toll plazas which are less than 60 kilometers, and that is creating difficulty, and people are demanding the removal of those toll plazas. Honorable Minister has But already he has, replied this. replied on that, Yes, so I am replied. Thank satisfied you. with that. Thank But you, Kalita ji. my direct question will be now that how long it will take to close those toll plazas and shift over to the new system that he has said just now. Thank you. Chairman, sir, we are in the process. 3 technologies are there. We want to select that technology. After that, we have to establish all furniture, software, everything for that. We are in position, sir, but it is difficult for me to give you the promise. But I will give you the promise because I need to also take one of the important law bill to the parliament. Without that, we cannot start the system. So within 6 months, sir, I will try my level best to do it because this is the need of the hour, and 100% from traffic jam and giving nuisance, giving a lot of trouble to the people. This is very important for the people, for the Assam, not only for Assam, but for the whole country. Sir, we will try our level best to make it as early as possible within 6 months. Thank you. Mani Rajiv Shukla. धन्यवाद उप सभापति जी। वैसे तो गडकरी जी की जो है इन्होंने जो काम किया है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला जैसे एनएचएआई के बारे में बता रहे थे कि एनएचएआई की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो रोड बिल्ड करता है उसको वापस उसका पीरियड पूरा होने के बाद वापस एनएचएआई के पास चला जाता है। तो मैंने सुना है कि क्या ये बात मंत्री जी बता सकते हैं कि सुना है कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है? थैंक यू। जिन रोडों को वापस एनएचएआई लेती है। थैंक यू। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एनएचआई की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है।
और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूं और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूं। एक भी पार्टी का एमपी नहीं कर सकता सर। NHI AAA रेटिंग है और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, हमारे जावड़ेकर जी ज्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूं, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। प्लीज मैडम बैठ कर मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHI का है और NHI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते। और आप जितने लोग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए और विश्वास रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूं कि ये पूरा हो। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 182 डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, नो नो नो, आपस में बातचीत नहीं, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, अच्छा प्लीज। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार जी। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अभी जो मंत्री जी ने जवाब दिया उसमें बताया गया कि देश की 8 करोड़ 41 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कार्यरत है और देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने महामारी में भी योगदान दिया, किसी ने PPE किट बना के, किसी ने मास्क बना के। लेकिन जब वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचने की बात आती है तो उनके लिए मार्केट अवेलेबिलिटी का रिसोर्सेज अब बहुत लिमिटेड है, लोकल मार्केट रह जाती है। यदि वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं 35% तक कट हो जाता है, उनको कमीशन शेयर करना पड़ता है और वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स जो कि 8 करोड़ 41 लाख हैं और हमारी हिंदुस्तान की वर्किंग वुमेन का आधा हिस्सा होगा, उनके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सवाल ब्रीफली डॉक्टर अशोक जी प्लीज। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट की क्वालिटी का मुकाबला कर सके ताकि वो उस पर जाके अपना माल देश में नहीं विदेश में भी बेच सके। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न को खड़ा किया है। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि 8 करोड़ 41 लाख और कुछ प्रॉब्लम भी उन्होंने रखा है। मैं आपके सामने सदन को ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने जब हम 2014-15 में आए थे तो 2 करोड़ 35 लाख हमारे सदस्य थी और 80,000 करोड़ क्यूमुलेटिव बैंक लिंकेज था। NPA था 9.58 और अभी 8 करोड़ 41 लाख हैं और बैंक लिंकेज क्यूमुलेटिव लगभग 5,24,000 करोड़ है। और जहां तक अभी मिशन 1 लाख हम लोगों ने लिया है
कि हमारी बहन जिसकी उन्होंने कहा कि आधी आबादी रूरल का, हम 10 करोड़ तक 24 तक जाने का संकल्प लिया है और मिशन 1 लाख हमने लिया है कि उनकी आमदनी 10,000 से 12,000 हो। और ये मार्केटिंग के लिए भी हम कई एजेंसी को साथ टाई अप किया है, एमओयू किया है। अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या अन्य संस्थान को, और राज्यों के साथ मिलकर के 6-7 राज्यों ने अपना ब्रांड भी बनाया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिन में ये 24 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप 19.5 करोड़ अगर देश में ग्रामीण आवास है तो हम 10 करोड़ महिलाओं को उस रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे मिशन 1 लाख के तहत, जिससे उनके द्वारा बनाए गए केवल मास्क नहीं बल्कि हर सामान की मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म राज्य से मिलकर के हम कर रहे हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री संक्षिप्त सवाल डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का तो शायद जवाब नहीं दिया। आप जो मल्टीनेशनल्स अमेज़न है और हैं उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले आप कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना 30% कमीशन उनके साथ शेयर ना करना पड़े, इनकम ना शेयर करनी पड़े? हो गया ना, मैं जवाब दे देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन दूसरा सप्लीमेंट्री अशोक जी ऑलरेडी ये दूसरा सप्लीमेंट्री हो गया आपका। प्लीज आप बैठ। सेकंड सप्लीमेंट्री है मेरा। एक सप्लाई चेन। आपने दूसरा सवाल अभी पूछा। नहीं, सवाल नहीं था, सवाल नहीं था सर। ठीक, मान्यवर सेम रिपीट किया। सवाल नहीं था। एक मिनट, एक कृपया आपस में बात ना करें, आपस में बात प्लीज। हाँ आप नहीं, मेरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल है सेल्फ ग्रुप से लिंक दी कि सेल्फ ग्रुप वाले अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनकी मार्केट क्योंकि सीमित होती है और हो सकता है उनकी वो जो प्रोडक्ट है दूसरे प्रदेश में जो कि साथ ही है सवाल उनका रॉ मटेरियल के तौर पे काम करे, तो हम कोई ऐसा क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं। ये सुझाव है, सवाल पूछें प्लीज। हाँ, जल्दी। वही सवाल ये है कि हम कोई क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सेल्फ ग्रुप मिलके काम कर सके एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट के साथ, ताकि उनको धन्यवाद। डॉक्टर साहब के पहले प्रश्न को पहले मैं जवाब दिया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी टाई अप किया हूं, पहले भी बोला आज भी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं 30% कमीशन का, वो जो मार्केट प्लेटफॉर्म का उनका है पूरे देश का सिस्टम, उसी सिस्टम में हम इनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक क्लस्टर का कहा, अभी लगभग 175 ब्लॉक में हम इस काम को करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर योजना को लाए हैं। डॉक्टर अनिल बोंडे। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है वो लोन का पेमेंट बहुत अच्छी तरह से करती है। सवाल, एनपीए बहुत कम रहता है। जैसे किसानों को क्रॉप लोन के लिए अपन इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, वैसा ही 3 लाख तक के कर्जे के लिए 0 इंटरेस्ट के तहत महिलाओं को लोन देने के लिए कोई योजना बनी है? धन्यवाद डॉक्टर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज देश के अंदर अगर हम देखते हैं, इसके लिए आज हम इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं 5% तक, बैंक का जो लैंडिंग रेट होता, और जो 3 लाख तक लोन लेते ये कह रहे हैं जीरो का भी कोई ऐसा स्कीम नहीं है। लेकिन देश के अंदर में उनको वहां तक पहुंचाना 3 तरह से पैसे को राज्य सरकार की ओर से, जो रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी फंड और फिर बैंकों से लिंक करके। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि 0% पर कोई अभी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर अमर पटनायक। सर, ये जो NRLM स्कीम है उसमें महिला एसएचजीज को काफी लाइवलीहुड ऑप्शंस के लिए, लाइवलीहुड एक्टिविटीज के लिए लोन दिया जाता है। बट आजकल ये लाइवलीहुड ऑप्शंस का चॉइसेस जो है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, young girls now want to learn about computer training
they want to set up a kiosk. लेकिन जो kind of livelihood options that are being given currently, वो सब उसी में सीमित है कि सिलाई मशीन या it is a candle making unit. तो मेरा सवाल ये है कि what are the kind of skill training programs that are being imparted under the NRLM to these women SHG groups, enlarging their scope for livelihood from the market. Thank you. इसमें उपसभापति महोदय माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आर शेट्टी से हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है। वो जो एंटरप्रेन्योर DDU GKY से जुड़े हुए हैं, लेकिन आर शेट्टी के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आर शेट्टी से ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो उनको मार्केट में जाने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय नीरज डांगे जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की बकाया प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रेंच केंद्रीयांश राशि राज्य को यथाशीघ्र जारी करने पर विचार करती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लिख के देंगे तो मैं जवाब देता हूं। क्वेश्चन नंबर 183 माननीय संतोष कुमार पी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री संतोष कुमार। Sir, this reply given by the minister is a clear indicator of the misuse and failure of this draconian law. Most of the arrested persons belong to the age group of 18 to 30. And I don't want to go to other details, but I will ask you one question. This is the year of the 75th, occasion of the 75th year of India's independence. Would you like to repeal this draconian act? Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर जो सभा पटल पर रखा गया है, जो जानना चाहते थे, बहुत स्पष्ट है। दूसरा, आजादी के 75वें वर्ष में इन्होंने कहा है कि क्या दोहराया जाएगा। पहले तो इस कानून को समझने की जरूरत है। और UAPA की अधिनियम 1967 में जो आतंकवाद के रोकथाम के लिए, सफाया के लिए जो कानून लाया गया था, उसको समय समय पर उसको सशक्त बनाने की जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि आतंकवादियों के द्वारा आतंकी घटनाओं में, या देश की सीमा हो या शांति हो या किसी प्रकार की असुरक्षा की भावनाओं से जब काम किया जाता था, तो एक तो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था, सामाजिक और विकास बाधित होता था, और देश से इसको बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए बार बार इसको, कई बार 4 बार इसका संशोधन किया गया। अभी UAPA के तहत जो कार्रवाई होती है, उन घटनाओं की कार्रवाई होती है, और उसके जो परिणाम आए हैं, उसके माध्यम से हम इनको बताना चाहेंगे कि यह क्यों जरूरी था। और इसको दोहराने की बात नहीं है। इसको जब आतंकवादी घटनाएं होती है तो उसके समूल नष्ट के लिए आग्रह होगा ब्रीफली माननीय मंत्री जी, ब्रीफली आप उत्तर। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब इस एक्ट में संशोधन हुआ और NI एक्ट में भी जब संशोधन होकर जब इसको मजबूत किया गया, क्योंकि आतंकवादी अपने कार्रवाइयों के स्वरूप को बदल देते थे, पकड़ने में उनको कठिनाई होती थी। तो आजादी के 75वें वर्ष सब खुशी से मिलाए, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष को कोई आतंकवादी डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बड़ी घटनाएं नहीं हो। जिस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट के माध्यम से लगातार, प्लीज मैं सेकंड क्वेश्चन होगा, प्लीज ब्रीफली आंसर, ब्रीफली। उनका यही है कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है, और कुछ नहीं दोहराया जा रहा है। बार बार यही हो रहा है, और यह तब तक होता रहेगा जब तक इस देश से आतंकवाद का समूल नाश नहीं कर दिया जाए। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री संतोष जी। Second, as I told you, this is your answer prepared by your ministry. So kindly go through the same. Please, question. This has become a serious menace to the Dalits and minorities.
So I don't expect that your government is going to repeal the act. But let me ask you one thing. Could you please define the term terrorism in a more clearer way? This is quite ambiguous and anything can be defined as terrorism according to the existing law. So please make it more clear if at all you are not going to repeal it. Thank you. स्पष्ट है, उत्तर भी स्पष्ट है। इन्होंने 3 वर्षों के राज्य बार इन्होंने धर्म के अनुसार पूछा था। धर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है एनसीआरबी में। राज्य और केंद्र शासित राज्यों द्वारा जो रिकॉर्ड दिया जाता है। और जहां तक आतंकवाद को परिभाषित करने की बात है तो इसमें स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित किया गया है कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए, देश की सीमा के लिए, देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई गतिविधियां लागू करेगा या कोशिश करेगा तो उसको हम आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा गतिविधियों को हम यूएपीए के कानून के अंतर्गत एनआई एक्ट के माध्यम से दोनों का समायोजन करके हम करेंगे। और इस कानून का उपयोग केंद्र और राज्य दोनों करती है। राज्य भी अपने हिसाब से करती है, केंद्र भी अपने हिसाब से करती है। और यह बिल्कुल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ही यहाँ कानून। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। दो सवाल मैं इस संदर्भ में जानना चाहूंगा। एक तो जो कन्विक्शन रेट है इस कानून का, आंकड़े तो यही बताते हैं कि ये बहुत कम है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके माध्यम से ये बताएंगे कि कन्विक्शन रेट को और बेहतर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद। एक प्रश्न। धन्यवाद। बस एक ही प्रश्न। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या उपलब्धियां है, कन्विक्शन रेट क्या है। वो वह चीज को पढ़ लिए होंगे जो उत्तर में है, जो उन्होंने कहा था कि राज्य बार आप आयु सीमा के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों की, तो वह राज्य के द्वारा यूएपीए कानून के तहत की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी और कन्विक्शन है। लेकिन जो केंद्र सरकार जिस चीज में दखल देती है उसका मैं कन्विक्शन रेट में बताना चाहता हूं 94.17, यानी कि 94.17% कन्विक्शन रेट है। और कुछ में तो 100% है। जिहादी आतंक में 100% दो सिद्धि दर है जो न्यायालय द्वारा हुआ है। और आप उसी तरह से वामपंथी उग्रवाद में देखेंगे तो 100%। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी धन्यवाद। जवाब नकली नोट उत्तर है सर। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो केंद्र सरकार के द्वारा जिन केसों को लिया जाता है, एफआईआर होते हैं, और उसकी बात मैं कर रहा हूं जो केंद्र सरकार जिन मामलों को अपने अंतर्गत लेकर यूएपीए कानून के तहत एनआईए द्वारा होता है। धन्यवाद। और वो देख रहे हैं जो राज्य का है तो वह राज्य का विषय है। धन्यवाद। राज्य इस कानून का उपयोग करती है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया सवाल पूछने वाले भी संक्षिप्त पूछें और माननीय मंत्रीगण भी संक्षिप्त उत्तर दें। दोला सेन जी, प्लीज। दोला सेन जी। सर, CID team investigating the Jharkhand MLA case has been restrained this morning by Delhi police in spite of having an order of honorable court, sir. Delhi police is involved in unlawful activities. I want a reply from the minister, sir. This morning, sir. Relates to UAPA. Want a reply from the minister, sir. माननीय जैन Want a चौधरी। reply from the minister, sir, माननीय for जैन this चौधरी, unlawful आप सवाल activities, पूछें, आपका सवाल sir. रिकॉर्ड पे जाएगा। Sir, please allow, sir. आप सवाल पूछें। प्लीज अनलॉफुल एक्टिविटी के जवाब चाहिए सर। महोदय दिल्ली पुलिस नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं। माननीय जैन जी का सवाल। प्लीज टेल द मिनिस्टर सर। प्लीज सर प्लीज। हाँ माननीय जैन जी, और कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। आप क्वेश्चन पूछे जैन चौधरी जी। प्लीज कोई बात और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। मैं पढ़ जाऊंगा दूसरी तरफ। आप पूछेंगे, पूछिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय मंत्री बोलेंगे जवाब। माननीय मंत्री जी ने राज्यभर सूची दी है कि यूएपीए कानून के तहत कितने लोगों को आपने धारा लगाई और कितने लोग कन्विक्ट हुए।
उत्तर प्रदेश के तरफ मैं आपका संज्ञान लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपने आंकड़े दिए 2018, 19, 20 में 1338 जो आपने केस दर्ज किए यूएपीए के, मात्र 83 कन्विक्शन है, यानी 6% कन्विक्शन का दर है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो गलत हो रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप सेंसिटाइज करें, प्रशिक्षित करें, क्योंकि हमने ये देखा हाथरस रेप पीड़ित, धन्यवाद धन्यवाद जयंत जी, धन्यवाद। प्रकरण में क्वेश्चन हो भी गया, पत्रकार धन्यवाद। के खिलाफ यूएपीए लगा दिया आपने, धन्यवाद। केरल से पत्रकार आए। माननीय मंत्री जी आपको महोदय, ब्रीफली। यह आंकड़ा राज्यों का है और उन्होंने गिरफ्तारी और कन्विक्शन की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि जितने मामले दर्ज हुए हैं सभी पर फैसले आ गए हैं। फैसले क्रमवार है, कुछ जांच में होगी, कुछ जो है सो न्यायालय में ट्रायल में होगा, कुछ का दोष सिद्धि हुआ होगा, या और यह राज्य भी इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करती है। तो जो हम उसके विषय में बताएं, जो केंद्र का है, राज्य के विषय में जो है वह कई क्रम में है। और यह जो प्रश्न के टेबल को देख रहे हैं उसमें सिर्फ कन्विक्शन का रेट, कुछ ट्रायल में होंगे, कुछ जांच में होंगे। थैंक यू। माननीय मुकुल वासनिक जी, आपके पास। Deputy Chairman, sir, thank you for allowing me to raise a कोई बात supplementary. रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। क्वेश्चन आवर, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। मुकुल जी, The conviction rate on the data provided by the Honorable Minister in the reply tabled in the House is absolutely dismal. In 2018, the persons convicted is 2.5%. In 2019, the conviction rate is 1.75%. And in 2020, the conviction rate is 2.6%. The Honorable Minister is trying to differentiate between the state governments and the union government. But when he is mentioning about the state governments, does he recognize that the number of cases and the number of persons arrested in Uttar Pradesh, where a BJP is in government, thank you, Jammu and Kashmir, please, thank you, which thank is a you, union territory, thank you, no, why Mukul does ji, not the thank you. Honorable Question Minister has to be reflect on brief, that? Mukul ji, you are a The senior conviction member. rate is Question has to be absolutely brief. poor. No, क्या nothing is going on record. No, माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राज्य भी इस कानून का उपयोग करती है और केंद्र भी करती है, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो होता है स्टेट का होता है। तो जो एफआईआर दर्ज स्टेट करती है तो उसका हिसाब किताब स्टेट रखती है, एनसीआर भी उसका कुछ जो घटनाओं की जो वहां से रिपोर्ट आती है सिर्फ उसको रखती है। और यह समझने की एकदम जरूरत है कि जो आतंकवादी घटनाओं के लिए के रोकथाम के लिए नहीं, समूल समाप्ति के लिए जो यह एक्ट है या अधिनियम है, वह बिल्कुल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जब राज्य एक दूसरे राज्य से जुड़ता है, वैसी घटनाओं में जब स्टेट के द्वारा कुछ अनुरोध होता है तो हम वैसे केसेस को लेते हैं। बहुत सारे एनआईए उसमें बिल्कुल वैसे केसों को जो राज्य खुद स्वयं देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसकी जांच करती है, उस पर पूछ रहे हैं। मैं बार बार उत्तर दे रहा हूं कि यह स्पष्ट समझना पड़ेगा कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है। उसकी सूचना हम आपने सिर्फ दिया है, उत्तर हम दे रहे हैं जो केंद्र जिस केस को टेकअप करता है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण, प्लीज क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया है। 3 क्वेश्चंस में 40 मिनट गए हैं। बाकी मेंबर्स जिनके क्वेश्चन है वो आते हैं, चेयर से कहते हैं हमारे क्वेश्चन है, तो दोनों से आग्रह है कृपया सवाल स्पेसिफिक पूछें, अदरवाइज बाध्य होकर चेयर को आगे से देखना पड़ेगा। और माननीय मंत्री जी भी चेयर जवाब ब्रीफली दें। क्वेश्चन नंबर 184 माननीय सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। माननीय मंत्री जी। Thank you. First supplementary. Thank you, sir. First, I convey my thanks to the Honorable Minister through you, sir, for shifted the Central Institute of Indian Languages to Nellore, which is in my own state of Andhra Pradesh, sir. I am putting only 2 simple questions, sir. Can the Honorable Minister provide the details of the funds allocated and released during this current financial year for the institute? Number 1.
And two, You will what get opportunity for e-learning second. steps- Subhash, you will get opportunity for second. You have put your first question, please. A simple question, sir. Very simple question, sir. I will give you opportunity for second supplementary. Please, please. Honorable Vice Chairman sir, our senior member has raised a relevant question. Actually, the funds given to the Center of Excellence of Studies in Classical Telugu, there is in the year 2018 and 19, the budget grant was 99 lakhs, but expenditure was 28,90,787. But in the 2019 and 20, it was 1 crore 7 lakh, and the expenditure was 75 lakh 12,457. And 2020-21, it was 1 crore 47 lakh, and the expenditure was 1 crore 10 lakh 16,383. And 2021-22, it was 1 crore 3 lakhs 15,000, and expenditure was 90,52,522. And you will be happy to know that in the 2022-23, the grant is 1.75 crore. Thank you. Second supplementary. Sir, this is also a very simple question, sir. Native tribal languages of Andhra, such as Kolami, Koya, Gondi, etc., that contribute to the rich culture of our state, need to be promoted. Does the government intend to establish a Central Institute of Indian Languages to preserve such languages? If yes, please provide the details of the same, or if not, what are the reasons for it? Thank you. Honorable Vice Chairman sir, I am happy to relieve the anxiety of the honorable senior member. There is a native tribal language of Andhra, such as Kolami, Koya, Gondi, etc., that contribute to the rich culture of our state need to be promoted. We admit it. This government admits it. And the government intend to establish a Central Institute of Indian Languages to preserve such languages, and that's works on all Indian languages are taking place in the existing projects of Central Institute of Indian Languages, including Varatani and SPPEL. These two projects. Again, I am telling Varatani and SPPEL. Tribal language of Andhra, such as Kolam, Koa, Gondi, are part of these projects. Efforts related to reach out to the scholars of these and generate new content and promote them by providing this content to the public, general, and the community in particular. Thank We you. are very much concerned about Thank you. Mani Harnath Singh Yadav ji. मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय तथा अन्य किसी शिक्षण संस्थान में किसी ऐसे पाकिस्तानी लेखक की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं जो भारत के नागरिकों को नरसंहार का आह्वान करता है और आतंकवाद का समर्थन करता है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? माननीय हरनाथ सिंह जी, क्वेश्चन रिलेटेड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू CILL. सो माननीय मंत्री जी चाहे तो जवाब दे सकते हैं, प्लीज प्लीज. मेरा प्रश्न पूरा हो जाए मान्यवर. हाँ, हो गया, क्वेश्चन आपका हो गया. एक सेकंड. नहीं, एक सवाल में कई सवाल ना पूछे. नहीं, इसी में एक सवाल है, इसी में कि यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण क्या है, और क्या माननीय मंत्री जी पाकिस्तानी लेखक द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की जांच करा के विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? धन्यवाद. Yes, it's not related. But at the Please, same time, you can leave it. if the member has written it, then It's not related, you can leave it. No problem. Question number 185. नहीं, MM Abdullah ji, माननीय MM Abdullah ji, please. Sir,
Thanks for allowing me to ask a sub-question on question number 184, sir. Honorable sir, based on the data, funds allotted to the promotion and study of languages, there is a discrimination. Higher amount is allotted to promote Hindi and Sanskrit compared with the other languages. Will the government take necessary step to equate the fund allocation to all the Indian language equally? Thank you, sir. Thank you, Abdullah. Honorable Vice Chairman, sir, we have the budget allocation in different languages, and it has been done according to the need of the institutions, and this is always according to the needs they demand, and at the same time it is being examined to the ministry, and at that wise fund is being granted. Dr. Ashok Bajpai. माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, केंद्रीय भाषा संस्थान की स्थापना के साथ ही लखनऊ में भी एक केंद्र स्थापित किया गया था। मान्यवर, आपकी भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा का बड़ी संख्या में इनका प्रचलन है, बोली जाती है। इन भाषाओं के विकास के लिए जो केंद्रीय संस्थान की शाखा लखनऊ में स्थापित हुई थी, इनकी भाषाओं के विकास के लिए क्या कार्रवाई अभी तक? धन्यवाद। मैं मंत्री से धन्यवाद। Vice Chairman, sir, our Central Institute of Indian Languages is always trying to promote all the scheduled languages as well as non-scheduled languages, tribal, minor and classical languages. Naturally, Bhojpuri also comes under this. So we are also very much eager for all the languages. Thank you. Now question number 185, Dr. Kanimozhi ji. माननीय मंत्री जी, first supplementary, doctor. Thank you, sir. So the minister has answered stating the various state commissions and what are the activities conducted, like power walk, setting up legal clinic. Since the crime against women is increasing, especially the cyber crimes originate from any part of the country, I would like to know from the Honorable Minister whether the Union government has any plans to create digital access to National Women Commission with all the state women commissions to combat cases with jurisdiction issues, as well as to provide adequate police support and coordination. As a member of the Standing Committee of Women Empowerment, I would like to put forth this to the Honorable Minister. Thank you. As we all become victims of it. Thank you. Commission, sir, on behalf of my MOS, I would like to answer to the Honorable Member. I think the suggestion is well taken. However, there is substantial coordination not only between ministries and commissions, but also particularly between the MHA, and since law and order is a state subject, with the police authorities and state governments as such. How we prioritize security and safety of women can also, sir, be highlighted by the fact that the Nirbhaya Fund, we have in this ministry, in coordination with various ministries of Government of India and state governments, looked at proposals worth 9,000 crores. And depending on the needs of the state to ensure better protection of women and children, and particularly young girls, projects have been sanctioned. In fact, in this year itself, I've responded to this very august house that projects worth 4,000 crores have been sanctioned. So not only the commission, but also the government at the center, and I'm surely at the state, prioritize safety and security of women. Thank you. Second supplementary, madam. So people get married from one state to the other state, and there has been harassments for the women. For example, if a woman in Karnataka or Tamil Nadu get married and goes to a north side, the police jurisdiction comes under the Madhya Pradesh or Maharashtra, wherever the girl goes. And the jurisdiction changes, so the law cannot be enforced over there. Digitalization would be much better if across India it has happened. Anyway, you give a complaint, it could be taken up for the cyber crimes. Thank you. So suggestion, please. Yes. Suggestion is well taken, sir, but since I'm not the chairperson of the NCW, I cannot act upon it. But surely, sir, I will ensure that this suggestion is conveyed to the chairperson. Mahua Majhi ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir.
मैं इस पर एक सवाल करना चाहूंगी। मैं झारखंड विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि नेशनल विमेन कमीशन के कॉन्फ्रेंसेस में मैं जब जाती थी, तो पूरे देश में जितने भी विमेन कमीशंस हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरह की फैसिलिटी है। कहीं पर स्टाफ नहीं है, कभी एक ही कमरे में वो चल रहा है, कहीं पर जैसे नेशनल विमेन कमीशन जो फंड एलोकेट करती है उन्हें देती है, तो उसके पास स्टाफ नहीं होते हैं कि वो प्रोग्राम अरेंज करे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सभी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के विमेन कमीशन में मिनिमम फैसिलिटी एक जैसा दे, ताकि वहाँ पे जो प्रोग्राम्स करना वो चाहते हैं या नेशनल विमेन कमीशन जो फंड देती है धन्यवाद। तो उसको सही ढंग से धन्यवाद। विदित होगा कि ये स्टेट कमीशन का जो फंक्शनिंग है वो प्रदेश की सरकार के अधीन है, इसलिए आपने जो चिंता व्यक्त की है निश्चित रूप से आपके प्रदेश की सरकार भी इसे सुन रही होगी, और अगर ना सुन पाए तो आपकी ये व्यथा मैं प्रदेश सरकार को निश्चित पहुंचाऊंगी। डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to ask the Minister through you, the Atmanirbhar Bharat campaign has shown the link between the ability of the women of the nation and the development of the country. This change is visible when 70% beneficiaries of Pradhan Mantri Mudra Yojana are seen in this country. Also, the self-help group, sir, has expanded very visibly, and many startups have been coming up by women. So I would like to ask the minister that since the woman's role is continuously expanding, are you thinking of expanding the scope of the National Women's Commission also? Grateful that the honorable member does acknowledge the work done by the government of India under the leadership of Prime Minister Modi, especially with enhancing capacities and potential of women of our country. Yes, I will enunciate and add to what she has said, not only in Mudra Yojana, but also when you see Stand Up India, where women are not looking at only SME sector, but also wanting to partake in mid-sized companies and lead them. We see that 80% beneficiaries are women. Particularly the skill development program, or my compliments to the Prime Minister for the national education policy, which for the first time has a gender inclusion fund. Now, insofar as enhancing the scope of the commission, I can only say this, sir, the skill needs and the entrepreneurial needs of women in our country is a subject in which I have seen the commission function during conferences, or for that matter, doing special workshops, including workshops in which state commissions are invited. रजनी पाटिल जी। चाहती हूँ कि यूपी के कार्यकाल में सेक्स अब्यूज एट वर्कप्लेस ये कानून पास हुआ था, फिर भी आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि वास्तविकता ये है कि अब्यूज होता है, घर में भी होता है और बाहर भी होता है, उसके लिए मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं? धन्यवाद। My particular privilege that when I was a member of the opposition, Sexual Harassment at Workplace Bill 2013 was discussed in this house, and I participated in that debate. Hence, I can only say this, कि जो माननीय सांसद महोदया ने 2-3 विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि घर में घरेलू हिंसा से कैसे जूझें, दूसरा जो काम पर हिंसा है अथवा महिला का जिस प्रकार से वहां पर काम में गतिरोध लाने के लिए किसी न किसी वायलेंट मेजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 छंदों में इसका जवाब देना चाहूंगी संक्षेप में। एक, लेबर मिनिस्ट्री के साथ सतत हमारा प्रयास रहता है कि लेबर कोड में वर्तमान में महिला काम के स्थल पर सुरक्षित हो, ये आप लेबर कोड में भी इसे विस्तृत रूप से देख सकती हैं। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर विमेन हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, हम मंत्रालय के माध्यम से न सिर्फ कमीशन बल्कि साथ ही प्रदेश की सरकारों के साथ, मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं बल्कि प्रदेश की अन्य इकाइयों के साथ भी सतत संवाद रखते हैं। कई बार महिलाएं ग्रीवियंसेस डायरेक्टली हमारे मंत्रालय तक पहुंचाती हैं, उन ग्रीवियंसेस को लेकर भी हम प्रदेश सरकार के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि जब तक महिला को न्याय पूर्णता ना मिल जाए तब तक हम ये संवाद महिला के साथ और प्रदेश की सरकारों के साथ जारी रखते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 186 माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू माननीय उपसभापति महोदय जी। मेरा क्वेश्चन नंबर 186 माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय शक्ति सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं
आपके जरिए से एक तो रक्षण चाहता हूं हमारे अधिकारों का, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ओरल में तो ठीक जवाब नहीं मिलता, पर रिटर्न में मेरा मंशा था, इस सवाल के पीछे जो इंटेंशन था ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रीट पिटीशन 2/2020 में कहा कि कोरोना के दौरान जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, उनको घर पे भी जो लाभ मिलता था वो बेनिफिशियरीज को लाभ मिलना चाहिए। नीति आयोग के एड से एक सर्वे हुआ, उसमें भी रहा कि 40% धात्री महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला। मैंने ब्यौरा मांगा था माननीय उपसभापति महोदय, 38 जून 2021 का दिया, पर प्री कोरोना क्या नंबर्स था वो नहीं दिया था। तो मैं पहले मेरे सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टोटल बेनिफिशियरीज on date 30th June 2021 as per your written reply are 9,61 lakhs and odd. Now I would like to know pre-corona how many total beneficiaries were there? Thank you. The honorable member seeks to get a response on a specific number for a specific date. He oscillates between pronouncing the Niti Aayog report, which has been factually reported in the answer given to him. Then again, he oscillates back to another date, which he wants me to give a specific answer on. I would like to hear, sir, clearly state 4-5 issues. The report that he alludes to is a report which the Niti Aayog in its acknowledgements acknowledges and disclaims publicly. The views of it are not supported by Niti Aayog. Secondly, possibly why Niti Aayog does not support the view is because the survey was done telephonically based on a call list based on 2011 census. Thirdly, in-depth interviews were done only with 30 workers in a country where there are 14 lakh Anganwadis. Now, when the honorable member seeks to find out how many services have been provided to how many beneficiaries, sir, as of May 2022, and sir, I'm sure the honorable member is aware that implementation of these services rests with state governments across the country. Digitally, verbally, in writing, states have reported that they are currently in May 2022 serving over 18 lakh beneficiaries, women and children included. I must here also highlight that there is an age group within which children, and there is a medical instance when there is a pregnant and lactating mother who is to be serviced through the Anganwadi. For the member to presume that the number of pregnant and lactating women will stay the same throughout, for the member to presume that a child between the age of 0 to 6 will stay fixed up to the age of 6 and not grow beyond the age of 6, I think, sir, is something that he needs to introspect on. But the data that has been provided, sir, in the answer is factual, and we have no intention of deluding or, for that matter, disrespecting the honorable member's desire to seek a factual response. I must again, sir, reiterate that the data I propose in this house as answer is a data that is dependent on what the states report, and this is what the states have emphatically said across the nation. Thank you. Second supplementary. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री ये है, पहले में तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नीति आयोग जिसको पैसे देता है और उसके रिपोर्ट को आप स्वीकार नहीं करते हो, तो आप कैसे लोगों को पैसे देते हो कि जो आपका रिपोर्ट आपको स्वीकृत नहीं है? माय सेकंड सप्लीमेंट्री इज कि क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष मोहन सिंह को रिप्लाई दिया कि हां, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इनको लाभ नहीं मिला, वो डिपार्टमेंट ने स्वीकारा, मंत्री जी जानते हैं। उसी आधार पे गुजरात के एक वर्नाक्यूलर अखबार ने डिटेल में कमिश्नर से इंटरव्यू किया और उसने कहा कि हमें ग्रांट नहीं आई थी इस दौरान, और उसी वजह से जिन आंगनवाड़ीज को, जिन बच्चों को, जिन मिड डे मील के बेनिफिशियरीज को जो लाभ मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो ये जानते हुए भी अगर सवाल का हमें ठीक से जवाब नहीं मिलेगा, अगर हो गया आप स्वीकार कीजिए कि हम नहीं दे पाए थे उस वक्त पे, लिफाफोफी क्यों? प्लीज। चाहती हूँ माननीय सांसद से, जब ये इस रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं और मैं कहती हूँ कि नीति आयोग ने स्वयं कहा कि दे
are in a position to say in their disclaimer that it does not necessarily reflect their view. I hope the honorable member has read the report in detail, because the report here enunciates that 96% women and children have received health benefits. Would you then disregard that position of the report? The report here says that institutional delivery of women in the pandemic, when there was a national lockdown, is 90%. So when I say that I am reflecting what Niti Aayog has said in its acknowledgement, please. I have the बैठ के बात report in करें, my please. hand right now, sir, from which I read. Second is, No cross talking, sir, please. when I am Please. quoting the Niti Aayog report, I have it in my hand. For somebody to wagger a finger and माननीय say मंत्री there is की no बात such रिपोर्ट data, जा रही है, this रिपोर्ट data पे, please. exists from 11 states, from a call list of 5 lakh people dependent on 2011 Please. census. Since the honorable member brings it up, I am compelled to highlight these issues as well. However, sir, as the member is enunciating RTI reports and answers which my ministry has given, I again would reiterate, sir, that the insinuation that the member is trying to possibly implicate us with, that those who are the poorest of the poor did not receive support. I can say as on March 2022, in our Anganwadi services, as reported by state governments, not only in the Poshan tracker, but also the ICDS portal, which is functional in recognition of the state's effort, we have again seen from the SC, ST, OBC communities, we have ensured that beneficiaries to the tune of close to over 3 crore 50 lakhs have received the benefits from their state government. For the member to insinuate, that his position is correct and that of state governments democratically elected in this country are giving spurious data, sir, is unfortunate. Please. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बज और चुके हैं. आंगनवाड़ी House वर्कर्स को stands ग्रेच्युटी adjourned देने till के 2 बारे PM. में